Meditations is a way of life and Tantra is life. Good afternoon, Namaskar, Jai Hind. A warm welcome to all on today's episode of Bhagwaan Shri Rajneesh Meditations. I am माँ प्रेम श्वेता और आप हमें देख रहे हैं NIN लाइव पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है तंत्रा एक ध्यान का मार्ग और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है माँ मोहिनी सृष्टि जी। Hello, namaste. Namaste, Ma Shweta. नमस्कार माँ। Thank you. Yes. माँ मोहिनी, a warm welcome to you on today's episode. आपका स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि माँ मोहिनी सृष्टि जी एक ओशो सन्यासी है, मेडिटेशन फैसिलिटेटर है, and I feel proud to say that she is the woman behind the Tantra Women's Festival of Goa, which recently happened. So, Ma, it's an honor and a privilege for us to have you here with us today. Thank you, Shweta, for this lovely, hosting this interview, this platform of New India News. And thanks for inviting me and giving this honor to address and, on, something connected with our Guru, Osho. So it's a privilege for me and honor for me to address on Tantra from the Osho's vision and teachings. So thank you. Amazing. मैं शुरू करूंगी अपना सबसे पहला सवाल पूछकर कि क्या है तंत्रा और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तंत्रा की? From where does it originate, basically? हाँ, सो पहले तो तंत्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो वो तो इंडिया से ही है। इसकी जो रूट्स हैं मैं ये बोलूँगी, क्योंकि तंत्रा इज एज ओल्ड एज 5000 ईयर ओल्ड। द स्क्रिप्चर व्हाट ओशो हैज आल्सो मेंशन, जो ओशो ने भी कहा है कि 5000 साल पहले जब शक्ति पार्वती आस्क्ड वेरी क्यूरियस क्वेश्चंस, अपने शिवा को पूछा कि ये संसार क्या है, ये so she was asking so many questions, Shakti, and in the answer Shiva was giving 112 sutras and that evolved विज्ञान भैरव तंत्रा। मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने की, पर कहीं ना कहीं आदत छूट गई है अब इतने मॉडर्न संसार में रह के। तो you can speak in any language that you are comfortable with, please. It's all about you. Please go ahead. Thank you. So so this evolved, from Shakti asking these curious questions to the Shiva, knowing what is this world, what is it all about, and to answer that, Shiva gave 112 sutras, and that, according to us, is also the origin of Vigyan Bhairav Tantra. There are two different streams which Osho has also addressed. One is coming from the Buddhist approach of Tantra, which is through Milarepa, through Milarepa and his guru. So that evolved into the Buddhist way of Tantra. And the other one is the Hinduism approach of Tantra, which came from this conscious conversations between the Shiva and Shakti. And that's why you would also see कि इंडिया में जो हमारा तांत्रिक स्टैचू है वो है अर्धनारेश्वर का, half Shiva and half Shakti, half man and half woman. And अगर हम कई जगह जाएंगे, अगर आप वृंदावन के भी मंदिर में गए हैं तो सिर्फ शिवा के ही नहीं, आई थिंक in India we have been having this belief that we are both masculine and feminine. So even जो कृष्णा का जो सबसे फेमस टेम्पल है बांके बिहारी जी का वृंदावन में, उनका जो स्टैचू है वो भी आधा राधा का है आधा कृष्ण का है। एंड बोलते हैं जैसे कि कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे हैं, सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं, सिर्फ राम की पूजा नहीं करते हैं, राम और सीता की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ शिवा की पूजा नहीं करते हैं, शक्ति की भी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी रूट्स में ये of having this feminine and masculine both together, Shiva and Shakti, this energy together is being worshipped. It's not being just worshipped outside of us, but also within us.
कहीं ना कहीं हमारा ये बिलीफ है, रिलीजियसली आप समझ लो, या संसार में जो भी हम अभी तक प्रीच कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, कि हमारे अंदर दोनों है, हमारे अंदर मेल भी है और फीमेल एनर्जी भी है। मैस्कुलिन एनर्जी भी जी डिसाइड करती है, फेमिनिन एनर्जी भी डिसाइड करती है। नो मैटर जी व्हाट, हम कोई भी बॉडी में हो, हम चाहे फीमेल बॉडी में क्यों ना हो, बट हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होगी। कोई अगर मेल बॉडी में है तो उसके अंदर फीमेल एनर्जी भी होगी। या जी। सो वी आर बोथ कॉन्शियसनेस एंड शक्ति, द डांस। शिवा इज द कॉन्शियसनेस, या, and Amazing. Shakti is the dance. Shakti is the form, and Shiva is the formless form. So, so we are a combination of this. और तभी हम देखते हैं कि Indian scriptures, Indian Hinduism scriptures, we worship both, whether it is any god, you know, the famous god if we take of India. तो तांत्रा में भी जो हमारा स्टैचू है, जो कॉन्सर्ट है, वो है अर्धनारीश्वर का, आधा नर आधा नारी। तो tantra works on this principle of nourishing and of being in service to nourish this feminine and masculine within us and harness this energy also in our relationships outside, जो हमारे बाहर के भी, जब भी एज अ कपल रिलेशनशिप होता है, या जब भी हमें बाहर के संसार से कनेक्ट करना होता है, कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, कुछ ना कुछ झगड़ा आता है, लड़ाई आता है। जी तो और तो यही हाउ वी कैन हार्नेस दीज रिलेशनशिप्स ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, एंड हाउ वी कैन bring a dance, how we can bring a harmony in our outer relationships and connections and within us. So there is this balance which can happen of the divine masculine and divine feminine, wherein this union can happen of the divine masculine and divine feminine. That is what I would say is Tantra and origin of Tantra. और ये कोई मैं कहूँगी कि ये एक रिलीजियस बिलीफ और कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग भी इसके इसके ऊपर डालना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स is dancing on this feminine and masculine meeting and mating. Yeah, how we humans have evolved, or how the universe is evolving, is because of the meeting and mating of the female and male. जब एक मेल और फीमेल संभोग करते हैं, तभी बच्चा और आगे का जो भी हमारी स्पीशीज है, इट इवॉल्व्स। तो yes चाहे वो फ्लावर्स हों, या बीज हों, या बर्ड्स हों, या एनिमल्स हों, या ह्यूमंस हों, the whole universe is dancing on female and masculine energy and meeting and mating. absolutely So if this has happened in harmony between us and humans, we are also in alignment with the universe. Yeah, we humans have this mind, and that's why we bring it too much and we complicate everything. We complicate of this course we connection do. between a man and a woman, and this is why probably tantra is so helpful to bring this sweet dance, this sweet loving wave and rising of energy together, and alignment of this inner Shiva Shakti and outer Shiva Shakti. Yeah, you've explained it so beautifully. I was mesmerized just listening to you, because as I said, this is a layman's, a lay person sitting here talking about tantra with you. uh, right now we spoke about nourishing and harnessing energy, and nourishing and harnessing energy is all about being in life, being in the moment and living. So I want to ask you how Tantra becomes a way of life. Because, with Tantra, we have so many misconceptions and misunderstandings associated. So, what you explained in general has given a rough gist about how Tantra is a way of life. But why are these misunderstandings and misconceptions about Tantra there in our minds? Why is it so? Because जैसे योगा इवॉल्व, योगा के बारे में कोई नहीं जानता था जब तक पतंजलि ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। योगा तो भी शायद इतना पुराना नहीं है जितना तांत्रा पुराना है। तो कहीं ना कहीं ये लॉस्ट हो गया है इन द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अस। वी हैव लॉस्ट आवर टच विद दिस ग्रेट विजडम। बट मैं कहूँगी कि तांत्रा सिर्फ एक बुक नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्चर नहीं है। तांत्रिक प्रिंसिपल
is very much connected to our life, because tantra जी does not, मेरे ख्याल से, मेरे जानने में, मैंने काफ़ी, मतलब मैं जब से 18 साल की थी तब से मेरा यही सर्च था कि प्रेम क्या है, सत्य क्या है, व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ ट्रुथ। तो उसकी उसके सर्च में मैं बहुत टीचर्स के पास भी गई, बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स में भी गई, but as much as I resonated with tantra, I didn't resonate probably with any other spiritual discipline, for the very simple fact कि tantra can be applied to our dailyhood life. Tantra can be applied to our everyday connection, whether it is with work, whether it is in our relationships with our children, with our neighbors, or with our employees or peers or whosoever. Because tantra just means bringing ourselves into the present moment, how we can be completely present, whether in our all connection, whether it is just simple gazing into somebody's eyes, yeah, just looking into somebody's eyes with full love and presence. How beautiful is that meditation, which can happen very effortlessly. How beautiful is that meditation when you are just holding hands with somebody and being completely loving and present without having to desire anything to get back something. तो मुझे लगता है कि तांत्रा बहुत ही सरल है। तांत्रा इधर से नहीं है, पर इधर से है, हार्ट से है, फीलिंग से है कनेक्टेड। हम अगर तांत्रा को यहाँ से समझने जाएंगे तो अगेन वी विल मिस इट। Tantra is all about our feeling. Can we really feel? Can we feel this, the beauty of the universe, the breeze, the swinging of trees, the chirping of birds? Can we really become alive? Can we feel our own touch on our body and on our skin? Can we be really truly connected with others, still being connected to our own self and not losing our center? So, how we can bring more presence into our work, into our connections, this is what I would say is Tantra. And bringing ourselves into complete balance. क्या होता है कि या तो हम जीवन में निंदा करते हैं, we either criticize or condemn or aversion, कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, या हम एडिक्शन में जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखना है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना है, बहुत ज़्यादा खाने पीने में रुचि है, either addictions or either aversions. Yeah, we are not being able to bring ourselves into middle path, into balance. That's the Buddhist approach. Yeah, tantra as a middle path, neither swinging here into too much aversions, neither swinging too much into addictions. कैसे हम मध्य में आ जाएं, हाँ, कैसे हम बैलेंस में आ जाएं, कैसे हम टोटल विटनेसिंग में आ जाएं, जो ओशो हमेशा कहते हैं, बी द विटनेस, बी द बुद्धा। तो वो कैसे पॉसिबल है? हाँ, वो जी कैसे बियॉन्ड में जाना पॉसिबल है? वो ऐसे ही पॉसिबल है कि हम कंप्लीट विटनेस बन जाए, हमारी एडिक्शंस के भी, हमारी निंदा के भी। और तभी देयर कुड बी एन अवेकनिंग विच कैन हैपन। अभी हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कंडेम करते हैं, सेक्स को कंडेम करते हैं, एंगर को कंडेम करते हैं, नहीं नहीं ये बुरा है, रिलीजन में सिखाया गया है या सोसाइटी में सिखाया गया है, सेक्स बुरा है, बॉडी बुरा है, गुस्सा करना बुरा है, घृणा करना बुरा है। तो तांत्रा में कहते हैं कुछ बुरा नहीं है, अगर ये है प्रॉब्लम, ठीक है, टेक इट, ब्रिंग इट, लेट्स सी इट इन अ मेडिटेटिव स्पेस. Let's transcend the anger into love. Let's transcend any kind of negative energy into awareness, into pure nectar, into pure love. So this is what is the Tantra approach. And this is what I feel we all need, in especially today's time, to of course live life with full aliveness, to not live life with denials. मतलब हम कैसे जीवन को पूरी तरीके से जी पाए, वो तंत्र है मेरे अकॉर्डिंगली। मुझसे कोई पूछता है कि तांत्रा ने तुम्हें क्या ऐसा गिफ्ट दिया, तो मैं कहती हूँ तांत्रा ने मुझे यही एक सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, इज टू फील अलाइव, टू फील फुली अलाइव इन माय बॉडी, इन माय होल सेंसेस, एंड टू फील दिस होल लाइफ अलाइव। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो नेचर है, चाहे कुछ भी बर्ड है, एनिमल्स हैं, जस्ट टू फील this whole life being alive and not being robotic and in front of just computer and being very monotonous and into the structure, just feeling life. beautiful
Um, right now, we were speaking about being alive, feeling alive, which is very important to our very existence, to the very core of our being. And we spoke about balancing. और जब बात बैलेंस की आती है तो मेरे जैसे simple everyday kind of a person who's not a deep meditator can only ask about how does tantra help in balancing the chakras. कैसे तंत्रा हेल्प करता है हमारे चक्रास को बैलेंस करने में और अपनी इंटरनल अलाइनमेंट को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने में. बहुत बहुत ही सुंदर सवाल. क्योंकि तांत्रा काफ़ी तरीके से काम करता है. तांत्रा काम करता है हमारी अवेकनिंग ऑफ सेंसेस को. हम क्या जी. करते हैं, हम अपनी सेंसेस को नंब कर देते हैं. हमारी 5 सेंसेस है. आईज, देखना, वी वॉच टू मच टीवी, नेटफ्लिक्स, मूवीज, all kind of rubbish, advertisements, everything. We are being adulterated. We are adulterating our senses unconsciously. Yeah. Eating, not really knowing how much and what to eat, what kind of food we are putting in our body. Smell, yeah, how we really also connect with our sense of smell. Touch, we have become very touchy with touch. Yeah, we have lost the Yes. sense of touch, the conscious healing touch. बच्चा एक होता है, वो सबसे पहले क्या मांगता है? टच. दैट्स व्हाई वी होल्ड द बेबी, वी लाइक सो मच टू टच एंड cuddle. So, taste. Yeah, taste we already mentioned. Hearing. Yeah, we are again listening too much music, too much TV sounds, too much all the soap operas, Of Ninda and all course. that. We get too much rust in all these things. So we are kind of adulterating our senses. So Tantra helps one in conscious awakening of our senses, कि कैसे हम अपनी इंद्रियों, जो हमारी ये 5 विंडोज हैं जिससे हम कनेक्ट करते हैं बाहर के संसार के साथ, जो हम बाहर के संसार के साथ कनेक्ट करें वही हमारा अंदर का इनर वर्ल्ड इट इज नर्चरिंग. या आवर आउटर कनेक्शन नर्चर्स आवर इनर वर्ल्ड. तो जो 5 ये हमारी इंद्रियां हैं उनसे हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं बाहर, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है. हम खुश हैं, हम दुखी Yes. हैं, हाँ, हम अलाइव हैं या हम डेड हैं. हाँ, तो वो हम कैसे अपनी फीलिंग दोबारा रिवाइव कर पाएँ, हम कैसे अपनी कॉन्शियसनेस हम वापस ला पाएँ कि हम बहुत ज़्यादा टीवी ना देखें, या हम अपनी एडिक्शंस को देख पाएँ कंप्लीटली, या हम अपने वर्जन्स को देख पाएँ कंप्लीटली. तो तांत्रा बहुत हेल्पफुल है वो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस लाने में. नाउ कमिंग ऑन टू दी चक्रास. सो चक्रास क्या है? हमारे 7 चक्रास. हिंदुइज्म और अपनी इंडियन उसमें हम कहते हैं 7 चक्रास हैं, बट बुद्धिज्म में कहते हैं 9 चक्रास भी हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे. बट लेट्स से 7 चक्रास. सो 7 चक्रास आर बेसिकली आवर एनर्जेटिक पोर्टल सेंटर्स फ्रॉम द रूट चक्रा टू द 7 चक्रा, जो कि ओशो ने भी कहा है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर. तो वो संभोग से समाधि की ओर की जर्नी कैसे पॉसिबल है, वो तांत्रा के थ्रू मुझे लगता है बहुत ही इजी है. क्योंकि तांत्रा सिर्फ सेक्सुअलिटी के ऊपर बात नहीं करता, तांत्रा सेक्सुअलिटी को भी एड्रेस करेगा. सेक्सुअलिटी से कनेक्टेड जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारा प्राइमल एनिमल इंस्टिंक्ट्स, उसको भी एड्रेस करेगा. प्लस मूविंग ऑन टू द सेकेंड चक्रा विच इज़ द चक्र ऑफ आवर इमोशंस, या चक्र ऑफ सेंसुअलिटी. सो वो उसको भी एड्रेस करेगा कि हाउ वी कैन बी मोर सेंसुअल, हाउ women can open more to sensuality. That's a more positive for women. For women it's very natural to be sensual. For men, for masculine energy, it is very natural to be sexual. Yeah. So how this masculine and feminine can also support each other in raising this energy up. Yeah, from raising the energy up to the root chakra, to the second chakra, to the third chakra, which is the chakra of ego and vulnerability. Yeah, right now in the world, where how we are operating is from our third chakra, very distorted power. That's why we see world in a mess, forest burning, yeah, all these things happening. So if these chakras can come into balance, into open alignment, into healing space, the world or the life of us as an individual, as a community, as a world could be much more a happy place. And then moving from third chakra to the heart chakra, yeah, loving our own self, loving others, and loving the whole.
So there are so many lessons for each chakra, which when we do this tantric journey of the chakras, we learn our life lessons for which we are born into this life. Yeah. So coming from this heart chakra up, the chakra of creativity, the fifth chakra, the chakra of truth, voicing our truth, being in alignment of our inner truth to voice out, to express, to communicate, to be a channel also with the co-creation to voice out. Yeah. Moving upwards more of the intuition, of intuitive channel, of seeing something beyond which these two eyes can't see, but this third eye can see. Yeah. And then opening finally to the sky. So all these things are possible to come in balance and to come in alignment and to open through Tantra, because Tantra is the only spiritual discipline which works on feminine and masculine both, nourishing both. And these chakras, so the first chakra, third chakra, and the fifth chakra are more masculine oriented principles or the energy. The second chakra, the fourth chakra, and the sixth chakra are more feminine oriented energetic centers. Yeah, that's why you see women are very naturally, or the feminine, I would say, I won't keep it specially to women's body or something, but feminine energy in itself is very intuitive, very loving, nourishing, nurturing, feminine, feminine energy, very sensual. Whereas the masculine energy, very much, sexual and ego, means ego could be also positive, also could be negative, Of power, course. yeah, and creativity. So those are the masculine oriented energetic, so tantra bring this dance, bring this open alignment and helps feminine and masculine to raise it together to meet into this open sky or super consciousness. तो जो ओशो ने बोला है संभोग से समाधि की ओर, वो बहुत ही सरल है, मैं कहूँगी, तंत्रा के द्वार से. Absolutely. Uh, we are right now speaking about how it all aligns together, how it connects with the universe, and how the universe also is a part of us, within each of us. So, how do we include a tantra in our everyday life? We are such busy beings. As you said, all our senses are affected, influenced, we are corrupted, all this. But how do we include this beautiful form into our daily lives as, everyday kind of individuals? सो मैं कहूँगी पहले तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जहाँ से भी हम सीखें तंत्रा के बारे में, थोड़ा सा और अवेयरनेस लानी पड़ेगी. ध्यान को अपना हर दिन का डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा. जैसे हम हर दिन नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही हमें मेडिटेशन हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन इन लाइफ. सिंस आई वाज 18, आई हैड अ रूम, आई हैड अ स्पेस फॉर doing meditation. I have a time in the morning that I dedicate my half hour to meditation. So first is that we need to have a discipline in our life. और एक थर्स्ट होना चाहिए टू नो समथिंग मोर डीपर. तो अगर वो थर्स्ट है, जानने की और चाह है हम में, तो हमारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं. बट वी हैव टू बी consistent. We have to be in discipline to know more, to dive in more deeper into our own self. बुद्धा को भी 13 साल लगे थे, जबकि वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में घर छोड़ने के बाद. तो अगर बुद्ध को 13 साल लगे तो हमें शायद कुछ जन्म लगे या कुछ और ज़्यादा साल लगे. बट हिंदी में है तो बताना, ठीक है. तो तो अगर हम चलते रहेंगे इसी पाथ पे, तो द्वार खुलेंगे, हम भी खुलेंगे, हमारा भी, और वी कैन ब्लॉसम मोर एंड मोर इनटू आवर लाइफ. एंड तंत्रा को लाइफस्टाइल में लाने के लिए थोड़ा जाने तंत्रा के बारे में. पहले तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा पढ़ें, Okay. थोड़ा कोर्सेज अटेंड करें, थोड़ा रिट्रीट्स, फेस्टिवल अटेंड करेंगे तो थोड़ा जानेंगे कि कैसे ला सकते हैं. जी जी. मैं
आई एम सो इम्प्रेस टुडे, मैं आज बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि तंत्रा इज अ वे ऑफ लाइफ। और जैसे आप उसे समझा रही है कि हम उसे आम जिंदगी में अगर लाना चाहते हैं तो वी हैव टू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ यू नो डूइंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग तंत्रा फर्स्ट। सिंस आई हैव यू हियर विद मी टुडे, सिंस आज आप मेरे साथ जुड़ी हुई है, आप, यू आर द फेस बिहाइंड द गोवा तंत्रा फेस्टिवल फॉर वुमेन, ओके? Yes. हाउ यू इंटेंड, आपका इंटेंशन क्या है, इसे आप और आगे कैसे स्प्रेड करना चाहेंगी, और क्या आप बताना चाहेंगी तंत्रा के बारे में? देयर इज अ क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिट्रीट्स इन कमिंग मंथ्स, नॉट Yes. वर्चुअली दो? Yes, yes. We do have, in fact, very soon retreat coming up on 18th of February. 3 दिन का रिट्रीट है वो गोवा में ही, 18, 19, 20, जो कि इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब आ सकते हैं, मैन वुमेन कपल्स. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट, I don't know how you can reach out to me, but maybe you can take the contact from Nin Life, and yeah, we can share my contact email address or phone number, and you can write to us and know more about this retreat. तो 18, 19, 20 का ये शिविर है, अगर आप आना चाहें, तांत्रिक शिविर है, और सब लोग वेलकम है, आए और जाने तंत्रा के बारे में मोर. एंड या, एंड आपका जो क्वेश्चन है श्वेता माँ, जो विमेन के लिए विजन है, मैं कहूँगी कि जी जब मेरा अभी विमेन फेस्टिवल किया गोवा में, और हम 30 लड़कियाँ थी, 30 औरतें, और इस बार जब मैंने देखा, सो हमारे पिछले तांत्रा रिट्रीट में ज़्यादा अंग्रेज आए थे, फॉरेनर्स. स्टिल तांत्रा इज़ वेरी एलियन टू इंडियन सॉइल एंड इंडियन एंड वी जी इंडियंस. एंड आई फील सैड ऑल्सो, कि क्यों, हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ, हमारे इंडियन भाई बहन या दोस्त क्यों नहीं आते हैं. पर इस रिट्रीट में जो हमने किया, चाहे आप पेंडेमिक समझ लो, चाहे कुछ भी रीज़न हुआ, बट वी हैड 98% Indian women attending this ओ women's tantra retreat, and I felt so happy I felt, and I felt like fulfilled and accomplished that. And young girls coming, so our youngest participant was 22 years old, and अमेजिंग yeah, so we had women in early 20s, 22, 26, 27 year old, and late 30s or 40s. But बहुत अच्छा लगा कि इंडियन लड़कियां और औरतें आगे आ रहे हैं तांत्रा के बारे में समझने के लिए, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में समझने के लिए. कहीं ना कहीं, चाहे कामा सूत्रा या खजुराहो इंडिया या तांत्रा इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, बट हम भूल चुके हैं कि हमारी ये रूट्स हैं. बड़ा दुख भरी बात है, बट और स्पेशली औरतों के लिए, जहाँ पे हम दुर्गा और इतना गॉडेस प्रे करते हैं, पर हम एक्चुअल में we have even forgotten what is the logic behind worshipping the external murti of a woman. If we are not able to worship the goddess sitting next to us as a friend, as a wife, as a partner, as a lover, yeah, तो वो हम कैसे ऑनर कर सकें, वो डिवाइन गॉडेस इन द बॉडी is what also we can learn through tantra, how we can honor the shiva, the shakti, the godliness in each one of us. And जी so coming back on the Wonder Women Festival, that's the name of the festival, Wonder Women Festival, जी because I feel every woman is wondrous. She has so much Shakti, so much power. She can be a mother, she can be a businesswoman, she can be really a lover, a seductress, a slut also. That's fine. Yeah, Nari के नौ एब्सोल्युटली रूप, नौ अवतार. तो वो 9 अवतार वो कैसे अपने आप को जी सकती है, जबकि वो, when she's empowered, when she's rooted from inside. So in these tantra festivals, we just, do this work in 5 days of just making her reconnect to her own self. Yeah, finding that inner power, finding that inner strength, knowing that she is not wrong to live her pleasure, knowing that she's not wrong to be meditating, yeah, or to express herself through singing or dance, or making. If the women is liberated in this world, as Osho also says, then the world would be much more happy place. I'm not biased to any man and woman. I love, men or women either in my life. यस Yeah, just to bring, the world into more balance. And जी
सो मैं कहूँगी कि उस विमेन फेस्टिवल में जो ओशो का विजन था, दैट कुड कम अलाइव ऑफ अ ड्रीम ऑफ अ लिबरेटेड एम्पावर्ड वुमेन. एंड आई वुड रियली इनवाइट, अगर कोई भी औरत ये सुन रही है तो आप ज़रूर एक बारी आए इस फेस्टिवल में अपने जी. लिए. हाँ, समय निकालें अपने दिनचर्या से. बेसिकली व्हेन आई जब मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे अक्सर ये लगता भी है कि वी आर शैकल्ड सो मच बाय सोसाइटी. हम इतने बंधनों में जकड़ जाते हैं कि हम अपने अंदर देखना भूल जाते हैं. वी हैव लॉस्ट कनेक्ट to ourselves. We've forgotten to look within us and we are busy trying to do what the shackles of society want us to do. This is something that, we've been realizing over a period of time. And as I always say, the master sets you free. He doesn't bind you in anything that is binding you and is keeping you tied down. Ma, as I'm speaking to you, I want to just ask you about a bit about tantric meditations and its advantages. If you can just tell us. About tantric meditation, and I lost you because of the connection. Tantric meditation and Tantric meditation and the advantages of tantric meditation okay. on the whole. So Hmm. ओके, सो पहले तो तांत्रिक मेडिटेशन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जनरली काफ़ी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम कहें मैन एंड वुमेन टुगेदर, और इट कुड बी आल्सो इट इज जस्ट honoring and working with the feminine and masculine energy. It's not about so much about the body, जी. but it's more about the energetic work of the feminine and masculine. Yeah, जी. so and we use in most of the tantric practices, it is comprised of three main things: breath, movement, sound. Yeah, and I just recently heard also bringing intention. Yeah, when we bring more intention, we bring more presence, and energy moves with the intent. या सो तो बहुत ही जैसे सिंपल तरीका है. मैं ये बोलूँगी कि आप जब अगर कभी नेक्स्ट टाइम इवन व्हेन यू आर मेकिंग लव, या ब्रीथ, या स्पेशली फॉर men or either women, if men just try to just channelize, breath is our prana. Yeah, by bringing more awareness and consciousness to our breath, we can really have a lot of access. So when we combine sex with prana, it helps the energy to move, to circulate in our body very naturally and effortlessly. So, so use breath as a tool. Yeah. Use sound. Yeah, we become very shut, especially in India, where we live in very big joint families. So then, like, अरे आवाज नहीं कर सकते, sex करते हुए, अरे नहीं नहीं नहीं. So we have become very hush hush again. We are not moaning, we are not making sounds. Make sounds, express. Sound is our expression. Yeah. So when we are making sound, energy again moves. And movement. So it's not about just one missionary position. I'm combining right now this practice with, sexuality, because people are, I think, also more interested to know how the mere mechanical sex could be sacred. Yeah. And somehow also to remove more inhibitions around our sexuality and sex and bodies. I feel okay, let's just give this tip. But there are many tantric meditations, there are many tantric practices. So just just bring these three tools and see what difference can it make to your own sexual connection, your sexual intimacy with your partner. And so movement I was talking about, so it's not just about missionary position. Try different movement, maybe let your body take over your mind. Yeah, what tantra helps is, mind is always in past or future. Yeah, mind is like a monkey, कभी इधर कभी उधर वो भागता रहता है, कूदता रहता है. पर हमारा जो बॉडी है, our body is only in the present moment. The moment even you touch your own self, you suddenly become more present. Yeah. So just coming, so tantra, what does it do is connecting and bringing us to more present by through this temple of body. Yeah.
So when you are making love or connecting with your partner, bring breath, movement, sound. Let your body take you over than mind. Maybe you want to shake, maybe you want to move, you want to make sound. Just allow and create that kind of sacred space. Yeah, create your making love temple as a real temple. Light some candles, bring some incenses. So, yeah, so experiment with this, and this could be your everyday practice or whenever you are making love. Yeah, so this could be your tantric intimacy. Yeah, this could be your this could be your bringing tantra into your sexual lifestyle, I would say. Yeah, and there is much more. Tantra can be used for emotional release, for emotional healing, for heart opening. There are tantric meditations for heart opening, for heart meditations, for creativity, for opening our intuition. But it's a much more detailed work. So tantra can be worked on every chakra for everything. But just to give a little gist on it, that how, because your questions has been that how tantra can be incorporated into our daily lifestyle, and what could Ji. be the tantric meditation. So, and sex has been a very taboo subject, and for me, I never have, I never mind to talk about sex, sexuality from a sacred Absolutely. approach. Yeah, and somehow, even when I was a child, it was never a taboo for me. So maybe I was already blessed for being still born in a very conservative environment. So yeah, Ji. so just practicing with breath, movement, sound, and bringing more intention and presence into whatever you do in your daily life can be very tantric. Some people are naturally tantric. I have met some people, they might not even know that this is tantra, and they are living a tantric lifestyle. So just experimenting, bringing more presence into whatever you do can help you to be into a tantric Ji. lifestyle. Yes, absolutely, ma. Absolutely. One question I want to ask you is, how are you spreading this message or wisdom of Tantra through your work? And there's a question from one of the viewers. Can you share your views on Guwahati's famous Kamakya for Tantric rituals? What do you Okay. say of this? Yeah, so Puneet, hi. Thanks for asking the question. But I have never been to Kamakya temple, though I have read or heard about it. I've been to Khajuraho temples, and yeah, so any temple has the sacred energetic centers, because maybe some other people or some other gurus or saints have meditated over there. So it contains these energetic portals. So it could be nice to go and feel the energy and meditate there and sit there. So to channelize and just to open and to be available to such spirits or energetic portals to elevate our energy or to elevate us. So yeah, if you live in Guwahati and you are there, why not go and meditate into these temples and receive some Shakti energy? I was just in Tiruvannamalai and I was surprised and amazed at how much Shiva energy that place has, and how much it is supportive of meditation. Yeah. So Ji. yeah, go to Kamakya temple. Take us also. Indeed, indeed. Ma, I must say this has been a very, very interesting session. One that has had so much openness, and the one which is making us, as I said earlier, look within ourselves and get in touch with ourselves by soul and body as well. Ma Mohini Srishti, thank you so much for taking out time and joining in with us today. I'm so grateful to you for being here and speaking so clearly, so openly about what Tantra actually is. It is about setting your soul free and aligning yourself with the universe and identifying the Shiva and the Shakti within ourselves. So, Ma, thank you so much for being here. Really glad that you came over today and have spoken so beautifully. Thank Thank you, you, Ma. Shweta, for inviting. And I would just also like to address your last question, which you asked, that how am I spreading this, work of Tantra? Is, Yes. we have online. So we have online website, as you can see also in front of my name, which is evolvedbeings.com.
So we have lots of online free content, free master classes, and the paid content and paid, courses on tantra, or courses on, festivals, also online festivals. So as much as we do women tantra festival offline, we also do women tantra festival online. Or we do online courses for couples, for for men and women both. We have content to address couples, single men, single women, whosoever. So tune in, and we have offline retreats, offline festival also happening. So in many ways, I'm trying to bring this wisdom back to our country, back to the world, that we all can benefit, we all can reap the benefit of this ancient wisdom, which is so natural. I feel there is no even effort needed. Like we think meditation is just by sitting, close eyes, and focusing somewhere. But I feel Tantra has such natural and easy practices and fun and playful that is also easy to bring us into that no mind space. So, yes, Absolutely. feel free to connect with us through the website evolves.com. We have an offline retreat coming up, as I mentioned before. So, yeah, you can get more details through Mashweta, or you can just send us an inquiry on Certainly. contact@evolvebeings.com. Certainly, certainly. Ma Mohini, thank you once again for being here today, for speaking so openly and, bringing so much vibrancy to a topic that is so beautiful and so deep from within. Thank you so much, Ma. We're very grateful to you. Thank you. Thanks again for inviting me, Shweta. Yeah, Thank my you. pleasure to talk on this subject. Certainly. Thank you so much.